It is one of the foundational topics in international relations. इसको समझने के लिए मैंने वो सारी जो खींचतानी की थी सिंस ग्रीक से, ठीक है, वो इसलिए क्यों, as I said, what is the main actor of international relations? State, of course state. स्टेट सिस्टम को समझने के लिए हमने वो सारे टॉपिक्स एक्सप्लोर किए, लेकिन जो मॉडर्न स्टेट सिस्टम उसकी बुनियाद कहां से पड़ी? वेस्टफेलियन सिस्टम से पड़ी, ठीक है। लेकिन बट बिफोर स्टार्टिंग दी मेन पॉइंट्स और मेन प्रिंसिपल्स ऑफ दिस वेस्टफेलियन सिस्टम, हम जो 30 ईयर वॉर थी उसके कुछ मेन आउटकम्स जरा देखेंगे, क्योंकि उस पर गौर नहीं किया जाता। बस ऐसे ही वेस्टफेलियन सिस्टम या ट्रीटीज ऑफ वेस्टफेलिया से हम शुरू करते हैं, ठीक है, दैट इज नॉट राइट। अब 30 ईयर वॉर जो है, इट एंडेड इन 1648, इट एंडेड इन 1648। वेरियस delegates from both sides, from Catholic side and Protestant side, they met at the province of Westphalia. Westphalia is a region in Germany, right? They met in Westphalia to discuss what? Peace terms, and they signed many treaties, not just one treaty. दूसरी मिस्टेक हम क्या करते हैं? ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, नो, ट्रीटीज ऑफ वेस्टफेलिया, ठीक है। देयर वर सीरीज ऑफ ट्रीटीज, मुख्तलिफ मुआहिदे थे, ठीक है, एक ट्रीटी नहीं थी, ठीक है। तो दे मेट देयर टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ यूरोप particularly and the world in general, right? Though Treaty of Westphalia did not vote any such territorial changes, territorial changes ज़्यादा मतलब नहीं आए इस 30 ईयर वॉर की वजह से, कुछ नहीं हुए ज़्यादा टेरिटोरियल चेंजेस नहीं हुए, बट यूरोप पे ऑन द फ्यूचर ऑफ यूरोप इन ट्रीटीज ऑफ वेस्टफेलिया का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट या इफेक्ट है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या होता है आउटकम्स ऑफ 30 ईयर वॉर में? हैब्सबर्ग एम्पायर वाज द नाइटमेयर फॉर all European countries, particularly for France and German states. It was the nightmare for France and German states, right? So technically इस वॉर का जो मेन विक्टर है 30 ईयर वॉर का, वो जर्मन स्टेट्स और फ्रांस, राइट? अब आफ्टर दिस 30 ईयर वॉर, हैब्सबर्ग was no more threat to the French Empire and the various German states. अब हैब्सबर्ग remained important in uniting German states. वॉर कहां से शुरू हुई थी? बोहेमिया से। कैसे शुरू हुई थी? When the Habsburg Emperor or the Holy Roman Emperor, who tried to impose Catholicism on the Bohemian Protestants, तो यहां से 30 ईयर वॉर इरप्ट हुई थी ना। तो अब इस जंग के बाद हैब्सबर्ग जो है वो नाकाम रहा, जर्मन स्टेट्स को अंडर द बैनर ऑफ होली रोमन एम्पायर वो जमा नहीं कर सका या यूनाइट नहीं कर सका, ठीक है। दिस इज द वेरी फर्स्ट आउटकम ऑफ दिस वॉर। अच्छा, उसके बाद खाली बात यहां पे नहीं रुकती है। द माइटी होली रोमन एम्पायर केम टू एन एंड एज वेल। It became too weak just because of the 30 year war, ठीक है। तमाम वसाइल उसके ड्रेन हो गए होली रोमन एम्पायर के, राइट, यानी नाम का रह गया। नाउ आफ्टर दिस 30 year war, the Holy Roman Empire was just a titular institution or state. Titular, what is titular? बराए नाम या जस्ट नाम का, टेट्यूलर, राइट। जो थर्ड आउटकम था, जर्मन स्टेट्स गॉट इंडिपेंडेंस। वर्चुअली ऑल जर्मन स्टेट्स गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है।
or they got independence from the suzerainty of Holy Roman Empire. All German states became independent. ठीक है, good. This was the first outcome of 30-year war. Now, the second outcome जो था this 30-year war का वो ये था कि जो Habsburg Empire था, before this war or during this 30-year war, the main concern of Habsburg Empire was Western Europe and Central Europe. After the defeat of this Habsburg Empire in 30-year war, it diverted its energies towards Eastern Europe. ठीक है, ईस्टर्न यूरोप की तरफ डाइवर्ट हो गया. अब वेस्टर्न यूरोप से ये इसकी स्ट्रगल या कोशिशें उसने तर्क कर दी. किसने? हैब्सबर्ग एम्पायर ने. राइट. सो दिस वाज द सेकंड आउटकम. शिकस्त देखा, शिकस्त हुई ना उसको वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में. दैट्स व्हाई अब ईस्ट की तरफ उसने रुख किया हैब्सबर्ग एम्पायर ने. अब जो थर्ड आउटकम था वो क्या था? नो रिस्पेक्ट. The third outcome of this 30-year war was United Netherlands, और जिसको हम United Provinces भी हमने कहा था, United Netherlands as well as Switzerland got independence from Holy Roman Empire. They became independent states after this 30-year war, right? Fourth outcome was what? The fourth outcome was France became the new emerging European hegemon. Okay. So the fourth outcome was France became the new emerging hegemon of Europe after 30 years war. समझ गए? For a century, the Spanish Habsburg and the Austrian Habsburg was a nightmare for Spain. That's sorry, France. तो कैसे Richelieu, the Cardinal Richelieu ने प्लान सेट किया to limit the powers of Habsburg, और वो कामयाब भी हुए. हमने कल के लेक्चर में सारी चीजें डिटेल में देखी. So the last outcome was what? It was the last religious war, which was brought by Reformation. It was the last religious war, which was 30-year war. It was the last religious war brought by the Reformation. What was Reformation? Reformation किसने किया था? Very good. Grouping, divisions, blocks. Sure ना करें? Blocks. ठीक है. चलें. ये तो थे outcomes of what? 30 years war. अब अभी हम करेंगे वेस्टफेलियन सिस्टम के कोर कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे. यानी वेस्टफेलियन सिस्टम या ट्रीटीज ऑफ वेस्टफेलिया में, ठीक है, किन किन चीजों पे एम्फसाइज किया गया या किन किन चीजों पे दोनों पार्टीज एग्री हो गई. ठीक है, हम ये डिस्कस करेंगे. सो नंबर फर्स्ट इज sovereignty. The treaties of Westphalia introduced what? The concept of sovereignty, and sovereignty is one of the core concepts in international relations. What is sovereignty in Urdu? Very good. It is iqtidar आला. Sovereignty is iqtidar आला, right? Treaty. आप इसके बाद टेक्निकली जरा आप रिमाइंड करें प्रीवियस लेक्चर्स को, तो अब बहुत सारी छोटी रियासतें भी आजाद हो गई थी from the clutches of Holy Roman Empire or Habsburg Empire. अब sovereignty की definition उन पे भी लागू होती है. They are equal to the great powers because they have their own sovereignty, and nobody can interfere in the domestic affairs of any state, either small or large. ठीक है, समझ गए? So virtually all small European states also got equal status to that of greater powers. This was the first concept, which was introduced by the Westphalian system or the treaties of Westphalia. So you know better what is the significance of this concept sovereignty in international relations. It is one of the foundational stones. It is one of the landmarks of international relations. The Treaties of Westphalia introduced the concept of sovereignty. Yes, the supreme power in any state. 1949 में एक करारदाद मंजूर हुई
नेशनल असेंबली में उसका नाम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। उर्दू में उसका नाम करारदाद मकासद। Who introduced this? Maulana Maududi. He was the main architect of this objective resolution. He was one of the great scholars. ठीक है, he was one of the great scholars. पाकिस्तान बना, शुरू में तो वो he was not in favor of पाकिस्तान, बना मजबूरन, आ गए इधर। तो अब चूंकि वो जीनियस थे, उन्होंने अपना आउटपुट देना था, कंट्रीब्यूट करना था, ठीक है। सो ही फॉर्मेटेड दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और उसमें ये चीजें आ गई। व्हाट? द सोवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज इंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अल्लाह। अब इस पे बड़ी डिबेट है, ठीक है, बड़े फोरम्स में। इट इज फिलोसॉफिकल टेक्निकली, राइट? जस्ट इट वाज ए फूड फॉर द थॉट, योर थॉट, ठीक है। आप इस पे सोच, नहीं लिया गया, वो अलग बात है, अलग बात है, ठीक है, नहीं लिया गया, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। हिस्ट्री रिमेंबर्स हु? किंग्स, नॉट सोल्जर्स। किसने कहा था? एगमेम्नॉन ने। किसको? एक्लीस को, ठीक है। यू आर जस्ट ए ब्लडी सोल्जर, ठीक है। योर नेम विल बी वॉश आउट, ठीक है, लाइक द वाटर वॉश आउट द शोर। History remember kings, not ordinary bloody filthy soldiers, ठीक है। So Modi ji was the architect, he was the king maker, but king was Khan लियाकत अली खान, राइट? अब सोवरेनिटी बेटा इतना डीप फिलोसॉफिकल टॉपिक है, ठीक है, और इट इज द सेंट्रल पिलर ऑफ स्टेट। What are the compulsory components, elements of a state? One by one. Number first is territorial base, ठीक है। Every state must have a territorial base, or it must be in a demarcated territory. One. Number second, a sizable population must reside in that demarcated territory. Number third, sovereignty. Sovereignty is the synonym of government. आपका रिप्लाई थोड़ा हट के हो ना दूसरों से, गवर्नमेंट कहोगे तो वो सेंस नहीं है। सोवरेनिटी, द थर्ड क्राइटेरिया फॉर ए state is sovereignty, and the fourth criteria for a state is what? Diplomatic recognition by other states. लिख लें ये चीजें। A demarcated territory, every state must have a demarcated territory, and a sizable population must reside within that demarcated territory, and they should have a sovereignty, a sovereign government to rule, to manage the affairs of their state, and for diplomatic recognition by other states, ठीक है। And there are two types of recognition I have told you. Can anyone tell me what were those two types of recognition? De facto and de jure recognition. De facto and de jure recognition. There are two types of recognition, state recognition. De facto means temporary recognition, not permanent. De jure recognition is permanent, eternal recognition of a new state, right? So, sovereignty पे जिस theoretician ने, जिस पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने सबसे ज्यादा काम किया है, हिज नेम इज जीन बोडीन। जीन बोडीन वॉज ए फ्रेंच फिलोसोफर, ठीक है। Jean Bodin has elaborated this concept of sovereignty.
He was a French philosopher. So what are the views of Jean Bodin regarding the concept sovereignty? Jean Bodin says that sovereignty is what? Absolute power. Sovereignty is an absolute concept or power. Okay? The second concept, yes, the second thing which was brought by the Westphalian system was the centralization of various institutions, particularly the military institution. Before the treaties of Westphalia or the Westphalian system or the peace of Westphalia, ये तीन नाम है इसके. Peace of Westphalia भी कह सकते हैं, the Westphalian system भी कह सकते हैं, the treaties of Westphalia, not just one treaty, many treaties, a series of treaties. So before this treaties of Westphalia or the Westphalian system, there was no centralization of military institution in Europe, but during the great Roman Empire, there was the centralization of military institution. भूल गए the Roman legions, but before them during Greek ages or the Greece and the city states of interaction में जरा गौर करें तो वहाँ भी military institution regularized था. It was centralized, like the Macedonian army, the great Spartan army. Spartans never retreat, they never surrender. Come with your shield or army, right? After Dark Ages, when Dark Ages started in Europe, तो हर चीज स्कैटर्ड हो गई थी ना. डार्क एज से इसलिए कहा गया इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग कोलैप्स ड्यूरिंग डार्क एजेस. अब तो नया एरा है, तो उसके बाद रेगुलरली जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन जिस पे तमाम पार्टीज कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स या ये कहें the stakeholders of this 30-year war, they agreed on one another concept, that was the centralization of institutions and particularly the military institution. अब इसमें क्या logic है? What is the logic behind this centralization of military institution? Can anybody help me understand this? Same. Let it बस सुने. जो 30-year war थी उसमें टू पार्टीज थी ना, द कैथोलिक ब्लॉक एंड द प्रोटेस्टेंट ब्लॉक. वेरी गुड. 3 प्रोटेस्टेंट कंट्रीज. मेरा उसूल है, मैं इस लेक्चर में आगे नहीं बढ़ता जब तक पीछे से मैं आप लोगों को घसीटते हुए लेके नहीं जाऊं. 3 प्रोटेस्टेंट कंट्रीज वर देयर, Denmark, Sweden and United Netherlands. But